Welcome to 11 channel. Today I have Ch341a faulty programmer. In this video I show you how to repair Ch341a programmer. When I plug this adapter, the light is glowing but nothing connect. You can see when I plug this adapter, nothing connect. Now find what's the problem. Five volt in 0 ohm resistor, but only 2.4 volt output. It means the 0 ohm resistor is faulty. Now check. It's a AMS 1117 regulator IC, and there is a output, no volt. There must be 3.3 volt. It's a 5 volt regulator, 3.3 volt regulator IC, but no volt on pin out. 3.3 volt not present. We need to replace 3.3 volt regulator IC and 0 ohm resistor. I repair many of the Ch341a programmer. It's common problem in this programmer. I have a 3.3 volt regulator IC. It's a step down regulator, 5 volt input and 3.3 volt output. I show you. It's a AMS 1117. You can see input output ground. It's a 3.3 regulator IC. I will show you. Let's change the IC. You can see AMS 1117 3.3, and it's a 1 ampere IC, 3.3 volt and 1 ampere. We need to install the 3.3 volt regulator IC and 0 ohm resistor.
I'm going to put 0 ohm resistor from dead M2 car. You can jumper this point, this 2 point, or install fuse or install 0 ohm resistor. Both are working. I am cooling down with this IC with thinner liquid. It's very hot. Let's check if it's working or not. You can hear the sound and disconnect. I have a EEPROM IC for checking purpose. You can see W25QFW is connected. Let's try to read. You can see it's working properly. Now I show you. Zero ohm resistor, input 5 volt, output 5 volt, 3.3 volt regulator IC, input 5 volt and output 3.283 means 3.3 volt. Now you understand how to
repair this kind of problem. Now in Hindi, मेरे पास इस तरह के काफ़ी यूनिट आते हैं रिपेयर होने के लिए। मैंने काफ़ी रिपेयर किए हुए हैं, इसलिए मैंने पार्ट्स वगैरह मंगवाए हुए हैं। 3.3 वोल्ट का जो रेगुलेटर आईसी है, इससे मैंने आपको पहले ये बना के दिखाया था। 1.8 वोल्ट रेगुलेटर आईसी से मैंने उसको इसमें लगाया था, SOP8 अडाप्टर के अंदर लगा दिया था, तो फिर ये 1.8 वोल्ट रेगुलेटर आईसी बन गया था। 1.8 वोल्ट का अडाप्टर बन गया था 1.8 वोल्ट रेगुलेटर आईसी लगाने से। उससे हमें 3.3 वोल्ट मिलती थी इनपुट, और आउटपुट मिलती थी 1.8 वोल्ट। और ये वाला जो रेगुलेटर आईसी है, ये 3.3 वोल्ट का रेगुलेटर आईसी है। इसको हम 5 वोल्ट देंगे, यहाँ से 6 वोल्ट देंगे, तो ये आगे से 3.3 वोल्ट निकालेगा। और साथ में मैंने इसको एक यहाँ पे 0 ओम की रजिस्टर लगी हुई थी, वो थोड़ी सी बर्न थी, वो मैंने चेंज की है, और ये 3.3 वोल्ट रेगुलेटर आईसी चेंज की है, तो ये मेरा प्रोग्रामर ओके हो गया। कुछ ऐसे भी प्रोग्रामर आते हैं जिनमें ये जो क्रिस्टल लगा हुआ है 12 मेगाहर्ट्ज़ का क्रिस्टल लगा हुआ है ये वाला, तो ये भी चेंज करना पड़ जाता है कई दफ़ा। जो कनेक्ट करते हैं वहाँ पे कनेक्ट होता है, लेकिन USB पोर्ट नॉट रिकग्नाइजेशन का एरर आता है, तो वो अक्सर ये 3.3 वोल्ट इसका जो सा है 12 मेगाहर्ट्ज़ का जो लगा हुआ है क्रिस्टल, इसमें भी प्रॉब्लम आती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।